world over, there were misconceptions world over about India's knowledge heritage. So this, Everybody used to think that Indians are an otherworldly people and they are more into metaphysics, more into adhyatma, and more into the punarjanama, next janama, and they are hardly bothered about the world around them or about their own condition in life. Now, nothing can be farther from the truth. Indians are the most worldly people, and Hindus' love of gold is matched by no one. Our love of gold, see, and we are every average Indian, average head of the Hindu family, Indian family, has two or three duties in his life: marriage of his daughter, building a house for old age, and looking after his old parents. And all his life, चार आश्रम हैं, चार पुरुषार्थ हैं, तीन मार्ग हैं. All his life is spent around these. So we people have a very meaningful life. We don't suffer from America, the Western existentialism. कि हमें करना क्या है जिंदगी में. बड़ा क्लियर है, मैं बड़ा बेटा हूँ, माँ बाप की सेवा करनी है, भाई बहन को पढ़ाना है, बहनों की शादी करनी है, फिर माँ बाप को देखना है और अपने बुढ़ापे के लिए एक छत बनानी है. Life is very purposefully spent. And it is not only material life. In fact, behind this lies a very important Jivan Mulya, value, an attitude to life. That life is to be lived not for yourself, but for others. It's a very difficult thing to understand. It seems very simple, but it is amazing how in India, large population, large number of people live their life on this principle. So we are not an otherworldly people at all. And our knowledge heritage is not only Shakuntala and Kalidas, you see, or the great Bhas and the dramatists. We Bhartrihari, we have philosophers like say Bhartrihari, we have philosophers, Shaddarshan, but we also have a very strong heritage of sciences. And because the normal misconception is there, so Joy Sen ji very rightly said that we should attend to science and scientific heritage. Now, I am not a man of science in the sense that I have not, I have been like Carlyle's professor, Herr Diogenes Teufelsdrockh, a professor of things in general. I have been a professor of things in general. I started by being a teacher of English literature, continued through linguistics and languages to Sanskrit to Indian tradition, and then till my own students used to wonder what was my subject, what was it that I was teaching. So I lost definition because I went into very many domains. So in that process, everybody, each one of us teachers, at some point or the other are required to think about disciplines other than ours. The very notion of discipline, which implies division of knowledge, is alien to Indian culture, Indian thought. For us, knowledge is one, and it is indivisible. So, but then we are used to the contemporary, very familiar division: science, social sciences, social sciences, humanities, and arts. Now, social sciences, sociology, etc., history, they try to acquire a certain status as science, and that is the problem. That under the influence of the Western contemporary technological genocidal civilization, we think that
Science science has enormous prestige, and being scientific is very necessary. Although what is being scientific, I think needs to be clearly understood and defined. So why one is talking about sciences is because people think that India didn't have a very scientific mind or a reasoning mind. And secondly, because they think that India only has some kind of ethics and some lot of poetry, Sanskrit poetry, and subhashitas and drama and all that. But which is not true. We have a very powerful body of what will be considered by anyone today as scientific thought. By the way, Europe does not share this definition of science. In Europe, there is science of music, there is science of philosophy, there is science of dance, you see. And only in the Anglo-American world, science is taken as something strictly pertaining to those areas of knowledge which are quantifiable and which are amenable to observation. Quantifiable and amenable to observation. उनको science कहा जाता है. और in a way, जो objective, I mean the reality, and it derives from the very foundational Greek thought. As you know, for the Greeks, geometry was the basic science, basic geometry. And what is geometry? Geometry deals with terra firma, earth. And geometry operates by cutting forms on the earth, triangle, square, you see, like this. So the reality for the Greeks was very firm, hard terra firma, and it was divisible, it was quantifiable, and it could be, in 16th century, Descartes said that this could be bended, this could be modified, terra firma, to serve man's purpose, So geometry, science of, in India, we have believed that reality is not terra firma, reality is terra cognita. You see, something which we construct in the mind. And the whole real, what is called real, is not seen as earth, but as an ocean. Reality for us is an ocean. And in the ocean, you cannot cut forms. You can't draw triangles, etc. Ocean is a continuum. And it is through language that we cut forms in this ocean of reality. This is Rigveda, Gauri Mimaya Salilani Takshati. Language cuts forms in the ocean of reality. बड़ा सिंपल है, ये इतना कठिन नहीं है. एक ट्रे में आपके सामने कुछ शीशे के टुकड़े और कुछ डायमंड, एक आधा डायमंड और एक आधा स्फटिक मणि मिला के 8-10 रख दिए जाएं. अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आपके पास पहचान नहीं है. जैसे ही आपने कहा अरे ये स्फटिक मणि है, तो आपने स्फटिक मणि को क्रिएट कर लिया अपने माइंड में. If you don't have the word, you don't have the knowledge, and everything is simply white sparkling stones. There is nothing. So terra cognita, and there is a language which comes on. तो इसलिए हमारा थोड़ा भेद है, but doesn't mean, you see, it's natural that our philosophy of science, our philosophy of knowledge is different from the Western. Now let's see. We are so talking today of why are we talking? Because the world over people think that India doesn't have a heritage of scientific heritage, and India doesn't have scientific. What is I mean, this is being said about a country, about a civilization, not a country. India is not a country. India is not a nation. India is a civilization, you see, and the only one which has survived for more than 10,000 years.
45 human civilizations disappeared, but we have survived. And we have survived because we have been a knowledge-centered civilization from day one. I won't go into recounting that we have the first book of mathematics, first book of geometry, first book of meter, first book of grammar, first book of sociology, first book. I know you can go on and on. We have first poetry in the world, first book in the world, first prose in the world. We are a knowledge-centered civilization from day one. And we are saying about that civilization, यदि इनका scientific temper नहीं है, science नहीं है. No, this is a civilization which created the concept of zero. Zero का concept हमारा creation है. Numerals 1 to 9 are our creation. These are called these days Arab numerals. Arab numerals. But do you know what the Arabs call them? What is the word that Arabs used for 1 to 9? Hindse. 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 That is their word for the numerals. So the numerals 1 to 9 are our invention. Decimal system is our invention. And we worked the value of pi up to 10 places. Ancient times. And our knowledge of the cosmos, the nakshatras, planetary positions and configurations goes as far even far beyond Mahabharata. Mahabharata mein to jagah you can identify when did, for example, Krishna last time go to the Kauravas to ask for peace. And the configuration of planets will tell you exact date when he went there. So, you know, we are 0, 1 to 9, pi, and also infinity. Concept. See, time is an invention of the Swiss people. Switzerland वाले घड़ियां बनाते हैं ना. Time is the invention of the Swiss people. The Jews, and this was said by a prime minister of Israel, that Swiss invented time and we invented eternity. The Jews invented eternity and the Indians invented infinity. Anadi Ananta. Anadi Ananta. The concept of infinity. Now, if you take out these basic concepts, no sciences have been there. So we are in fact the seed of all the sciences that have developed in the world. This civilization is the seed. ये पहला याद रखना जरूरी है. थोड़ा polemical लगता है ये कहना, but because we people suffer so much from क्या कहना चाहिए हीन भावना कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम तो बैकवर्ड हैं और सारा ज्ञान तो वेस्ट से. वो ठीक भी है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियां अंग्रेजी की ही किताबें और वेस्टर्न किताबें, वेस्टर्न फिजिक्स वही पढ़ाती हैं. हमारे यहाँ nobody teaches Bhaskaracharya, nobody teaches other thinkers Indian thinkers who have done. By the way, maybe you have been already told, in 2010, a group of us teachers, particularly school teachers, lady school teachers, and us, we created a 2-volume course for class 11 and 12. It is called Knowledge, Traditions and Practices of India, KTPI. It is 2 volumes and I think it has 24 modules. That means 24 disciplines. Most of them what you will call sciences, physics, metallurgy, chemistry, etc. It is freely downloadable. Go to the CBSE site, CBSE, and download KTPI. Just download. And you will get the basic facts about Indian contribution to what are today familiar to us as contemporary sciences. The textual contribution with the textual evidence. Those are not books which we have written on hearsay or through adjectives, but they are based on hard textual exposition.
Texts are quoted. So this is one, that we have the basic. Another thing about, you see, I was saying that our notion of reality is different, because if you want to define science or scientific disciplines, you will say that, they are determined by the object of knowledge and the means of knowledge. For example, you want to know matter, you study matter, and you have physics, right? And you study, something related to the elements, hydrology, like that. So the object and the means. In what is called science, the means are either senses or reasoning. Senses or reasoning. That is, I will mention two names to you. The source of epistemology, means of knowledge in sciences. There are two sources in the Western tradition. Descartes, in order not to make mistake about spelling, sometimes call it Descartes. That's how it is written, Descartes. Descartes. Descartes, his book on method, and Francis Bacon, his book Novum Organum. Now Descartes is the father of the rationalism, and Francis Bacon's Novum Organum is the text of empiricism. So there are two modes, rational and empirical. Now they produce two different methods of reasoning: inductive reasoning, deductive reasoning, inductive logic, deductive logic. These are, again, the words are very impressive, and the concepts are, because, people don't try to understand things in a simple way. They are very simple. Inductive is when you observe a large number of items of data and you draw a conclusion. You draw a conclusion from observation of a number of facts. Let's say 20 times you see a mouse running away when the cat comes, or 20 mice running away when the cat comes. And you say that the mouse is afraid of the cat. This is inductive reasoning. Large body of data, from there you draw a conclusion. Deductive reasoning is, you see one event and you generalize. You see there is a mouse there, you see a cat entering, and the mouse scampers away quickly. You deduce, you generalize that a mouse is afraid of the cat. Now, when you are doing inductive reasoning, logic, you have to disprove it by falsifying. One counter example. In deductive logic, deductive reasoning, you have to establish the validity by verifying it. You have to set up numerous more examples of that and then validate that your conclusion is correct. So the validation distinguishes the two modes of reasoning, logic. तो लॉजिकल रीजनिंग एंड सेंसरी, प्रत्यक्ष, जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष अंग्रेजी में कहते हैं परसेप्शन, परसेप्शन एज द एपिस्टेमोलॉजी. अब प्रत्यक्ष तो बड़ा साफ शब्द है. प्रति अक्ष, जो हर एक की आई देखती है. नाउ आई स्टैंड्स फॉर ऑल दी सेंसेस. तो जो आप देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, एक्सपीरियंस फील करते हैं, वो जो आप ऑब्जर्वेशनल डेटा है जो सेंसेस से आता है, that is the epistemology, one epistemology for sciences. And the other is logic, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, लॉजिक. और भी है, विकल्प है, जैसे certain concepts are available in words, but you cannot see them
or actually, construct them in the laboratory. For example, E is equal to mc square. You cannot actually see it. You cannot actually perform it in the laboratory. But it's a concept which is not only, it is a concept is real in the sense that it is essential to explain so much of the reality, particularly, for example, reality of interterrestrial space and travel through interterrestrial from one kind of the galaxy to the other, and the size and the dimension of the cosmos, you see, and the light, the speed of light and all that. You can't see it. E is equal to mc square. वो दिखेगा नहीं. ये विकल्प ज्ञान है. ये आइंस्टाइन को भी, Einstein is on record. He did not reach this conclusion through any experiment in the laboratory, nor through reasoning. He did not reach this principle either through reasoning or through perception, protection, or laboratory. He says, it came to me like a flash, not very different from the flash that came to Mahatma Buddha after 5 years he was sitting under the Bodhi tree. The jnana about life, the truth, came to him as a flash. In James Joyce's novels, you have the concept of epiphany. Epiphany. बैठे बैठे trance हो जाता है. Trance. In the state of trance, you gain something. So, please do not think that what is called scientific, I don't like very much that word, but then now we're talking about those. Scientific knowledge is necessarily a product of the laboratory, or a product of experiment, or a product of reasoning only, or product of observation sciences. In fact, some of the most crucial insights, they come from intuition. Even in science, they come from intuition. Anyways, the point is that Descartes and Bacon, they laid down कि भाई ये reasoning है और ये observable है और ये sciences हैं. There is one more element you should enter into this, Galileo. Because Galileo had a telescope, you see. Now, that is technology. You have rationalism, you have empiricism, and you have technology. And technology is both a product of pure science, and it is also something that controls, extends the boundaries of science. Now, what is technology? Technology simply creates such instruments which increase the power of your senses. That's all. बड़ा शब्द इंपॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजी का बहुत है. टेक्नोलॉजी है क्या? जो आप सेंसेस से अपनी से काम करते हो, उस आपकी सेंसेस की शक्ति को टेक्नोलॉजी बढ़ाती है. आपसे कोई चीज नहीं उठती तो आप एक लिफ्ट बना लेते हो. आपको इतनी दूरी दिखता है तो आप टेलीस्कोप बना लेते हो. आपको बहुत बारीक चीज नहीं दिखती तो आप माइक्रोस्कोप बना लेते हो. आपको एटम के टुकड़े नहीं दिखते. एटम के, you don't see the proton, the electron, the neutron. You can't see. Then you create cyclotron, the machine that breaks the atom, and then you see it. See this. So what is technology? Technology are instruments with which instruments which make the data amenable to within the purview of your senses. Bring what is not in the purview of your senses, bring it in the purview of your senses. This is technology. अब इंडिया के साथ वेस्ट को प्रॉब्लम ये भी रही है कि आर्यभट्ट ने 4th सेंचुरी में सब कुछ बता दिया. दुनिया गोल है, सोलर सिस्टम एक सिस्टम है, सन इज एट द सेंटर, planets go around it,
solar system is only one of the systems. There are galaxies, वो सब बता दिया. But the West never accepted him as a scientist क्योंकि उसने इंस्ट्रूमेंट नहीं दे, इंस्ट्रूमेंट से देखा नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है, प्रिजर्व नहीं. उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से स्प्रेड ओवर ईयर्स he tracked the movement of planets, ये सारा किया. But you know, unless you actually produce a photograph, because the Western civilization is a scriptal civilization, script की है. आपको पता है ना, Moses went up Mountain Sinai because the Jews fell into bad ways after the Jews were freed from Egyptian slavery by Moses. They came to what is modern Judea and they fell into evil practices. You see? So he was very tired and very shocked. So he went up to Mount Sinai to seek guidance of God. He went to Sinai and God came down. So they met halfway. And God gave him 10 commandments. You know what Moses said? Kindly write them down. Because in the Western tradition, if a Baba or a Sant goes to people and says कि भैया देखो आत्मा को तो स्वच्छ रहना होता है, तो वेस्ट में कहेगा तो वो कहेंगे लिखा हुआ दिखाओ, कहाँ लिखा है बाइबल में या कुरान में कहाँ लिखा है, तोरा में कहाँ लिखा है. पर इंडिया में हम शब्द प्रमाण मानते हैं, वहां नहीं मानते. तो उसने कहा कि काइंडली राइट इट डाउन. And if you read the Old Testament, God wrote with hand of fire. That is the line. God ने engrave किया tablet, इसमें 10 commandments की थी. So they are a scriptal people. उनके लिए उनको चीज लिखी हुई सामने होनी चाहिए, इसलिए वो स्क्रिप्टल में उसके पर. हमारे यहाँ नहीं है. आर्यभट्ट ने आंखें बंद करके देखा. Our scientists see with their eyes shut, and their scientists see with their eyes behind the lens of a telescope or a cyclotron. After all, behind all the technology, behind the most powerful telescope, you see, there has to be the human eye, and the human eye has its limitations. And of course, all machines have their limitations. The universe is endless, anadi ananta, infinite. And your Jodrell bank or the one that they have made after that telescope, it can't reach even a periphery of the universe. So this is the philosophy of knowledge is different, and our achievements in science are fundamental. Zero. And by the way, you see, the man who invented zero, you will not call a scientist. See, he was a grammarian, Panini. Of course, Panini's Ashtadhyayi, 7th century BC grammar, is an algorithmic grammar. Although the notion of algorithm came only in the 19th century, but 7th century BC, he created an algorithmic grammar of a human language. And complete, comprehensive, rule-bound, explicit. In a very, very brief format. That grammar is only in 32,000 syllables, not words even, syllables. 32,000 syllable को 8 syllable के अनुष्टुप में बांट के 4,000 सूत्र हैं और उनको एक श्रुति स्वर में पाणिनि ने खुद बोला, और जो हमारे संस्कृत ग्रामेरियंस हैं वो उसको एक श्रुति स्वर में बोलते हैं. उस व्याकरण को, वो व्याकरण बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता है. हमारे वेद जो हैं, वेद शब्द comes from vid. Vid means to know.
to see. To see is to know. And from with, you have the English word visual. From to know, you have Ved, which means knowledge. And the Vedas are not meant to be read. They are meant to be heard. श्रुति है वो, श्रुति, श्रुत ज्ञान है. गुरु उसको बोलेगा, समझाएगा, और तब आपको समझ आएगा. पढ़ने पे समझ नहीं आएगा. इसलिए all our modern efforts to revive Vedic studies by prescribing written Vedas and studying them with dictionaries will not go back to that Vedic culture, which was basically a Shruta parampara, a Shruta tradition. Because the very intonation of the sound has a meaning. The very intonation, the tone, it has a meaning. We are talking of people who have created the foundation of science. Now, what is scientific temper, therefore? Do Indians have a scientific temper? I think Indians have a very strong scientific temper. I tried to explain that scientific temper consists in observation as the means of knowledge and logical reasoning, logic. That is the scientific temper. Actually observe and then use logical mind, reasoning. Because हमारे यहाँ एक faith, intuition जो है, faith भी बहुत बड़ी उपमान. Simile is a very important means of knowledge for us. ये तो उसकी तरह लगता है ना. अरे ये तो हमारी क्लास का, ये तो हमारी क्लास का हनुमान है. You see that similarity. ये भी means हमारे Indian epistemology is very complex. In fact, goes up to anything up to 16 modes. जबकि West basically works into perception and inference, anumana, logic and experiment. Of course, what is experiment? Experiment is reconstructed experience. Experience, what you have in life, उसको जब आप construct करते हो laboratory में, जैसे अगर आप धूप में, आपने आजकल सर्दी है तो कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो आप धूप में रखते हो, वो पिघल जाता है. और अगर आप कोकोनट ऑयल को लेबोरेटरी में नीचे दिया जला के देखेंगे, देन यू विल से कि इतनी डिग्री पर कोकोनट ऑयल पिघल जाता है. इसको आप साइंस कहेंगे. ये साइंस है कि आपने जो लाइफ में होता है कि कोकोनट गर्मी में पिघल जाता है, उसको आपने मेजर कर लिया लेबोरेटरी में. दिस इज व्हाट आई कॉल क्वांटिफिकेशन. Anything subject to measuring, quantification, observation is science. तो ज्यादा भेद नहीं है. समझ तो बात इसके बगैर भी आ जाती है, पर जिसको जरूरी है कितनी डिग्री पे पिघलाना है तो वो डिग्री समझ ले. Scientific temper, logic and observation. Now, have Indians had the scientific temper? You read any text of any discipline and India has a massive body of intellectual texts. Massive body. We have 4 knowledge resource languages. हमारे 4 भाषाएं हैं जो ज्ञान का स्रोत हैं. संस्कृत, पाली, प्राकृत and old Tamil. 4 knowledge resource languages. मैं आजकल अवेस्तन को भी इंक्लूड करता हूं, क्योंकि ये पारसी हमारे जो भाई हैं अब तो 60,000 के करीब रह गए हैं. They have made a disproportionate contribution to India. This small community, Zoroastrians, जो ईरान से 7वीं शताब्दी में आए थे, वहां से देश निकाला मिला. इनकी भाषा भी वहां से इधर आ गई. इनकी अब भाषा वहां नहीं बोली जाती. So just as the Parsis are an exiled people, their language Avestan is an exiled language. Why Avestan? We should consider also as an Indian knowledge resource language, because in Avestan you have a very important
ancient text, Zend Avesta. Zend Avesta, which is a sibling text of Rig Veda. It's a sibling text, you see, ऋग्वेद का. और ऋग्वेद को समझना है अगर, तो आपको Zend Avesta. You see, both were composed in what was then, even today, a cultural continuity. You see, Rigveda was composed in what is modern Afghanistan, and Zend Avesta was composed in what is modern Iran. And continuity है उसमें अभी भी है. Even today, there is a continuity between from Iran right up to India. Continuity of cultural continuity, continuity of philosophy, worldview, attitudes, morals, values, and so on and so on. If those of you who have been witnessing the recent protests by girls in Iran, you know, girls in Iran, will see how the Iranians are more like Hindus, much more like Hindus. You see, the way the protests that they are carrying out. You see the same thing happening in Pakistan also, some kind of thing. However, these are matters which are outside our today's discourse. But I'm bringing it to you because Zend Avesta, you will say why Iran and why India and all that. These political boundaries are shifting boundaries, and there are cultural entities which are larger than political entities. अब इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि इंडिया का, यू हैव टू रीड टेक्स्ट. आप षड दर्शन पढ़ लीजिए. You read, you see, I said 4 knowledge resource languages. Sanskrit is the language in which the world's largest body of intellectual texts have been composed. Largest body. In fact, you can have a whole university with 27 disciplines with only Sanskrit texts as primary texts. It's possible. Although no one tries because we have forgotten our strength and we don't know what we have, and we don't have much value for what we have. We have more admiration for what others have. Anyways, so you can have largest body. तो कुछ भी ले लीजिए, आप अष्टाध्यायी ले लीजिए. अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी एक ग्रामर है, व्याकरण है, और ईसा से कम 7वीं शताब्दी पूर्व, उससे पुराना हो सकता है, उससे पुराना भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग बायोग्राफिकल लोग नहीं हैं. हमारे लिए इंडिविजुअल की अकम्प्लिशमेंट नहीं मैटर करती. हमारे यहाँ क्रोनोलॉजी ऑफ बर्थ एंड डेथ नहीं होता. हमारे यहाँ क्रोनोलॉजी ऑफ आइडियाज होता है. आइडियाज की क्रोनोलॉजी बड़ी क्लियर है कि पाणिनि ने यास्क के बाद लिखा, और पाणिनि के बाद कात्यायन ने लिखा, कात्यायन के बाद पतंजलि ने लिखा. आइडियाज की कंटिन्यू क्रोनोलॉजी है, राइट डाउन टू नागेश भट्ट ऑफ कर्नाटका in 1795, beginning with Panini, 7th-8th century BC, up to 1795. We have a continuity of text, the lesser body. अब कोई ले लीजिए, grammar ले लीजिए. अब in that grammar, I'll give you an example of scientific temper. Then I'll give you another example, a much more serious example. You see, he says, how is the sound nga in Sanskrit? Sound nga, how is it pronounced? What is its correct pronunciation? And in those days, tape recorder तो नहीं थे, टेप रिकॉर्डर नहीं थे. और पाणिनि कहाँ था? पाणिनि टेक्सिला में था. टेक्सिला आजकल पाकिस्तान में है. टेक्सिला में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तो वो वहाँ पढ़ाते होंगे, पता नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर थे कि एसोसिएट थे. उस जमाने में ये नहीं होता था, टीचर गुरु होता था बस, और गुरु के ग्रेड नहीं होते थे. तो वो वहाँ था. तो वो पूछते ङ का शुद्ध उच्चारण क्या है? इसे ङ का शुद्ध उच्चारण वो है जो सौराष्ट्र की नारी करती है. The way the women in Saurashtra enunciate this ng sound, that is the correct enunciation of ng sound in Sanskrit. Now this is empirical data. I'll give you another example. He says that ये बड़ी होमली, आपको अच्छी भी लगेगी, कि बासमती राइस सबसे बढ़िया पाटलिपुत्र का, पटना का, बिहार का,
और वाइन 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 सबसे अच्छी कपीशा की, कपीशा अफगानिस्तान में। कपीशा में आजकल भी ये जो आपको सौगी खाते हो ना, सौगी अंगूर बहुत पैदा होता है कपीशा में, अफगानिस्तान में। वाइन कपीशा की और चावल पाटलिपुत्र का। जी, ये तो हो गया एक बड़ा होमली एग्जाम्पल, बट इट टेक्स अनदर वर्ब रूट, शव। शव हिंदी में शव का मतलब है डेड बॉडी, बट इट सेज इन अफगानिस्तान, he mentions the areas Balkh and Kapisha and other places, Panchashir area. Shava is used as a verb, and Shava means to go, जाना. But इंडिया में जाना जो हो गया, the great going, महाप्रस्थान, death. So in India, Shav means a dead body. I give you another example. The root drata, it is used as a verb in East India, Northeast India, to cut. But drati in Punjab region, it is used as a noun, cutter. I think you don't need more evidence for the empirical foundation of a very, very rigorous discipline like grammar. लॉजिक, अदर पार्ट। इसी तरह आप नाट्य शास्त्र पढ़ लीजिए, षड दर्शन पढ़ लीजिए, आप कुछ भी एरिया, आप बौद्धों के देखिए, संस्कृत में पूरा सनातन धर्म का बौद्धिक वांग्मय है, पाली में सारा बौद्ध धर्म का जितने उनके पिटक हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, इमेंस बॉडी ऑफ बुद्धिस्ट नॉलेज, और प्राकृत में इमेंस बॉडी ऑफ जैना, सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन। पर अब हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना उसमें, हम लोग तो शेल्डन पोलक और कोई अंग्रेज का नाम मिल जाए उसको डाउनलोड करके पढ़ते हैं, है ना, अपने ग्रंथ तो हम देखते नहीं। लार्जेस्ट बॉडी of intellectual texts which have been digitized and put online is the जैन वांग्मय, जैनों का वांग्मय लार्जेस्ट बॉडी है, तो इमेंस बॉडी ऑफ नॉलेज है। एनीवेज, कोई ग्रंथ ले लीजिए। नाउ लॉजिक इज एन एपिस्टेमोलॉजी, मीन्स ऑफ, देखिए एपिस्टेमोलॉजी बड़ा भारी शब्द है, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, आप जानना क्या चाहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स ऑफ नॉलेज, वो आप जानेंगे कैसे, आपका जानने का साधन क्या है। लॉजिक, रीजनिंग। हमारे यहाँ एक महात्मा बुद्ध हुए हैं, आप भी जानते हैं, है ना, सिद्धार्थ गौतम's great contribution, the great contribution of intellectual contribution of Siddhartha Gautam is that he shifted the Hindu mind from ritual to reason. Buddhist logic आजकल सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों में, बुद्धिस्ट लॉजिक। और शैचर बस्की की किताब है, आप जाके अभी भी गूगल में भर लीजिएगा, शैचर बस्की, SATCHERBSKY, शैचर बस्की बुद्धिस्ट लॉजिक। तो महात्मा बुद्ध did not believe in the authority of the Vedas. Buddhism is a materialist philosophy. Jainism is also a materialist philosophy, but this is not scotch drinking materialism. The Indian materialism, Jain and Buddhist, is ethical materialism. So, you look at this. So the great contribution of Mahatma Buddha, 6th century BC, the Hindu mind shifted from ritual to reason. कर्म कांड से तर्क में आया, रीजन। सो रीजनिंग, अनुमान is a very important epistemology. If you read the text of philosophy, षड दर्शन है, हमारे आस्तिक हैं, आप बौद्धों की जयंत भट्ट की प्रमाण वार्तिक पढ़िए, आप जैनियों के ग्रंथ पढ़िए, तो you find that तर्क is accepted, reasoning is accepted as a very important epistemology. In fact, we have in India a Vada Parampara, a long tradition of disputation.
discussion by argument. And it was a very rigorous, there was a rigorous format for the वाद. वाद में ये था कि the discussion was held to reach the truth, not to make fun of the opponent or to ridicule the opponent. And there were some rules. When you are discussing your ideology with the other person's ideology, you have to then argue from your ideology. You can't bring in arguments from other ideology also. कि वो भी यही कहते हैं. No, it's not allowed. You may remain in your own system then, not out of the system. So Vada Parampara is a great example of logic, logical reasoning. But then, if you want to know, I'll mention a book, Tantra Vartik by Kumaril Bhatta. अगर आप ये किताब छठी शताब्दी, ईसा के छठी शताब्दी की किताब है, 6th सेंचुरी की, कुमारिल भट्ट का तंत्र वार्तिक, उसका जो 10वां अध्याय है, अधिकरण कहते हैं, 10वें अध्याय में there is an argument between the Buddhists and the grammarians on whether grammar is necessary at all, because people speak, people communicate, there is no problem. Why should there be grammar? A great argument, but see, you will get an example of the Vada Parampara. There is a Purva Paksha, there is the other point of view, and there is yours. And the basic premise is that you will first present the opponent's point of view very faithfully, and then you will start contradicting it, and then reason against it. तो तर्क को हमारे यहाँ हमेशा एक epistemology माना गया है, but our difference from the West is that we have never considered reasoning as superordinate. That reason cuts everything else. No, we have not said that. We have said it's one of the, because Bhartrihari, a 5th century philosopher of language, Bhartrihari says that the epistemology is determined by the object of knowledge. The means of knowledge is determined by the object of knowledge. आप क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए आपको साधन चुनना होगा. साधन उसके अनुरूप होता है. तो इसलिए he says, for example, the well of water is cool in summer and warm in winter. Reasoning cannot explain this. Or the quality of a diamond. Diamond की purity क्या है? या the taste of wine or the taste of tea. You know, tea taster are very expensive jobs. They get lakhs of rupees, tea tasters. They simply sip and they tell you. Reason will not tell you which is the superior tea. Reason will not tell you which is the more pure diamond. So we have not put, there were differences, we not put reason above everything, but it is a very important epistemology. We have the scientific temper, there is no doubt about it. You read philosophy texts, you read, even if you read Kalidas, Kumar Sambhava, which is about 12 seasons, Bara Masa, how lovers behave differently in every season. You will see there is great a scientific temper behind this, an understanding of the season, and understanding of human emotions, and understanding of the human body, and that is all what I suppose reasoning or knowledge is about. Second point, I was going to tell you that I will give you an example of how the Indian mode of Indian scientific temper, how we differ. We are all familiar with gravitation, law of gravitation. You see, you are all, I think you all know Newton and वो सेब गिरा और उसने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भाई गुरुत्वाकर्षण होता है ना, एक अर्थ में है, पावर है, वो खींचती है. और हमारे कई, क्योंकि इंडियन स्कॉलरशिप डेरिवेटिव है, हमारी स्कॉलरशिप और ट्रांसलेटेड स्कॉलरशिप है, तो हमारे कई स्कॉलर कहते हैं कि जी
कन्नाद ने वैशेषिक सूत्र में ग्रेविटेशन प्रिंसिपल न्यूटन से 1600 साल पहले, इतने 100 साल पहले, बट इफ यू रीड क्लोजली कन्नाद, मतलब कन्नाद का एक छड़ दर्शन जो है ना, 6 दर्शन है, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये पेयर्स में है। 6 दर्शन है, पेयर्स में है। एक ऑन्टोलॉजी का है, एक एपिस्टेमोलॉजी का है। सो यू हैव थ्री डिविजन्स। So you have Uttar Mimamsa, Purv Mimamsa, you have Sankhya, then you have Yoga, then you have Nyaya and you have Vaisheshika. So Vaisheshik is ontology. और कन्नाद आपके बिहार का था, मिथिला का, और उसका नाम कन्नाद पड़ा, कनभुक्त था, कनभुक्त। वो वैशेषिक सूत्र, his वैशेषिक सूत्र is after Charvakas the most materialist philosophical system. But he was, as I said, they are ethical materialists. Kannad was a rishi. For us, whether you are a materialist or an idealist or a theist or an atheist, doesn't matter. Thinkers are all rishis. He used to live outside the village, and when the crops were cut and the farmer had taken away all the grain in bushels and packets, सारा अनाज ले जाता था, तो जो अनाज के कण फील्ड में पड़े रह जाते थे इधर उधर बिखरे हुए, उन अनाज के कणों से वो गुजारा करता था, उससे वो जीता था। कणभुक्त था, कणभुक्त, इसलिए उसे कन्नाद कहते हैं, कन्नाद। तो कन्नाद ने अपने वैशेषिक सूत्र में बड़ी अद्भुत बात कही है, बहुत ही वो it is not gravitation. In fact, he doesn't believe in gravitation. But he explains the phenomenon. He says that there is, and you know, this comes from Vedic sciences में एक principle है, mass of the object and mass of the environment. और उस प्रिंसिपल लेके he says that everything, whether something is at rest, when something is at rest or something is in motion, very existence, you see, it has its origin in something. And even the apple growing on the branch of a tree, you see, it's a motion, it's a movement, and it's a product, and it's something initiates it, some power initiates it, energy. It takes a certain shape, and after a certain period, if you let it be, it has progressive changes and all that, and then ultimately it falls. वो सड़ के गल के गिर जाएगा, खत्म हो जाता है। एक पूरा सृष्टि में ये जो बर्थ से डेथ या बिगनिंग से एंड तक का जो प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस को वो एक तरह से I'll tell you what he says. आप लीजिए, ये केस लीजिए, आप देखिए, जब तिनका होता है हवा में, जब अंधेरी हवा चलती है, तो तिनका हवा में उड़ता है, तिनका हवा में उड़ता है, और थोड़ी देर बाद वो तिनका फिर नीचे आ जाता है, या तिनका पता नहीं कहां उड़ जाता है। अगर एक होती है विस्प ऑफ कॉटन, अभी आप बड़े ब्राइट सन में देखेंगे तो एक रुई रेशे से होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। दे आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स, रुई रेशे टाइप के, दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश विस्प्स ऑफ कॉटन। और हम अगर बहुत ब्राइट सन में क्लियर देखेंगे, हमको वो कई बार दिखते हैं, वो उड़ते रहते हैं। अगर ग्रेविटेशन एक फोर्स हो, ग्रेविटेशन, तो कोई भी चीज अपने आप ऊपर नहीं रहनी चाहिए, उसको नीचे आ जाना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। बट वो तिनका उड़ता रहता है, पर तिनका गिर जाता है। कब गिरता है? जब उसके पीछे जो फोर्स,
जो वेग, जो वायु ने जो उसमें वेग डाला था, वो वेग उस तिनके की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट इज ए मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे अगर एक पंखा चल रहा है, पंखे के सामने आप एक कागज का टुकड़ा रख दीजिए, कागज का टुकड़ा उड़ेगा और वो थोड़ी दूर चलता जाएगा, फिर गिर जाएगा। वो एक इनिशियल पुश, पुश जो दी, उस पुश ने उसमें वेग डाला, तो वो एक के एक चलता गया चलता गया जब वो वेग खत्म हुआ, पुश, जब वो पुश खत्म हो गई, तो वो गिर गया, गिर गया, ठीक है ना, गिर गया। बट सब चीजें गिरती नहीं है। जब वो बेसिक एनर्जी रहे ना रहे, कुछ चीजें ऊपर जाती हैं, कुछ चीजें तैरती हैं, कुछ चीजें डूब जाती हैं, कुछ ऊपर चली जाती हैं। मतलब एक जो जो विलो दी विस्प होता है, वो नीचे नहीं वो चलता, वो तो उड़ जाता है, पता नहीं कहां कहां चला जाता है। इट मे dissipate through the heat of the sun, but it doesn't fall, doesn't fall, it floats. So floating, flying और drowning, submerging, ये जो conditions हैं, ये किस कारण होती हैं? According to Kannad, when the mass of the object is greater than the mass of the environment, then the object falls. When the mass of the object is equal to mass of the environment, then it floats. And when the mass of the object is less than the mass of the environment, then it flies. So he uses the word guru, but guru in our terminology, जैसे म्यूजिक में लघु और गुरु, गुरु का मतलब होता है हैवी, लाइट और हैवी। कन्नाद uses the word भार, भार, उस वस्तु का भार, भार। तो जो वस्तु का भार, अब पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रक्रिया है, टेक द केस ऑफ एन एरो। देयर इज समबडी who decides that I am going to fire the arrow, shoot the arrow, and there is then a combination of the karta with the instrument, bow and arrow, liya. Then you see there is the what is called, देखिए स्टेजेस, देखिए निर्णय, पहले निर्णय लिया, आत्मा से प्रेरणा मिली कि भाई मैंने करना है, निर्णय लिया, करना है, अब करना है, कंजंक्शन हुई, संयोग, वो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट लिया, उसके बाद उसकी करण शक्ति, यू नो, अगर आपने कभी कुंग फू वाले, कुंग फू जो मार्शल आर्ट है, जो इंडिया से चाइना में गया था, और जो शाओलिंग मोनास्ट्री है चाइना में, 1st सेंचुरी एडी की बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, वहां पे देयर इज ए मैसिव इंस्टीट्यूट ऑफ कुंग फू। कुंग फू में एक जो कुंग फू में ट्रेंड होता है, एक से शार्प नेल, पिन, एंड देयर इज ए थिक शीट, ग्लास शीट, he focuses on that and he focuses the entire strength of his body in his hand and then he throws that. ये जो पूरी एनर्जी इकट्ठी करके, इसे कहते हैं करण शक्ति, तब वो मारते हैं। एंड यू नो that pin, it goes through the 1 inch thick glass sheet, इसलिए उसमें फोर्स आती है। तो पूरी बॉडी को, ये योग में भी आता है, और योग में मार्शल आर्ट इज कंडीशन बाय दैट कि आप अपनी, जैसे अगर आपने भारी बाल्टी पानी की उठानी होती है, तो आप झुक के थोड़ी टांगों को स्टेडी करके को ऊपर जोर लगा के बाल्टी उठाते हैं, करते हैं ना, दिस इज करण शक्ति। बट इफ यू आर एबल टू कंसंट्रेट द होल एनर्जी ऑफ योर बॉडी
on something. Now imagine the power that you can impart at that moment. तो वो जो करण शक्ति के बाद you fire the arrow. तो जो वो जो प्रयत्न एफर्ट जो है विशेष एफर्ट वो एक चित्त होके एकाग्र चित्त होके वो किया उसने तो फायर किया ये उसमें फिर एक जो मूवमेंट आती है वेग वो मूवमेंट उसे संस्कार कहते हैं हमारी भाषा में वो संस्कार है वो वेग एक स्पीड से वो चलता है और जो ट्रैवल है वो ट्रैवल इज नॉट ए सिंगल लाइन it is a series of points in space and every subsequent point is impelled by the previous point and gradually as you move onwards that impulse weakens till the sanskar नष्ट हो जाता है वो जो impulse है वो नष्ट हो जाती है and then the arrow because of its भार not अर्थ की गुरुत्व but भार उसका जो मास है वो एनवायरनमेंट से ज्यादा हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है अब जब हवाई जहाज इतने टन का 1000 टन का होता है खड़ा जब वो बहुत स्पीड से चलता है और हवा की जो उसको काटती है तो उसका अपना मास जो होता है जो हवाई जहाज का वो एनवायरनमेंट के मास से कम हो जाता है जितना कम होता है उतना वो ऊपर जाता है नाउ जो जब इक्वल होता है तो वो तैरता है ज्यादा होता है तो डूब जाता है पत्थर पानी में डालते हैं डूब जाता है तो एप्पल का संयोग था ट्री के साथ जब वो संयोग टूटा उसे कोई इंपल्स तो नहीं मिली उसका जो मास है वो एनवायरनमेंट से ज्यादा है और वो नीचे आ गया तो न्यूटन ने कहा कि जमीन ने खींचा कन्नाद कहता है वो मास का जो इम्बैलेंस है उसके कारण वो नीचे आया तो यू सी there is the same phenomenon somebody has to evaluate which is a more adequate explanation of the phenomena और देखिए राम सेतु बड़ी बहस हुई और हमारे वो जो थे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा रामचंद्र जी ने कौन सी आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री की थी है ना इस तरह के जो फजूल की बातें but they denied the very existence. Your government of India gave an affidavit in the court that Ram Setu is not a reality and it is not a man-made object. Till NASA, through its imagery, satellite imagery, showed that it is a man-made object. Not only that it is an object, the very constituents of the Ram Setu, the stones, they found that the stones do not belong to that area. They were brought from somewhere else. And Ramayana says that the stones floated. Now, how will they float? You see, the power of Kannad's explanation is that his principle is very powerful because his principle explains not only falling down but also going up and floating. So his is a more powerful principle than the Newtonian principle of gravitation. See? Now then, how did the stones float? Why did they float? I was in Pune some years back. Vijay Bhatkar ji, you know Vijay Bhatkar ji, the man who invented the Param computer. When America denied supercomputer to us, then Bhatkar ji was asked to create, and he created Param computer, which was 5 times faster than the American supercomputer.
He is a very, very fine, very humble man. And I am lucky that he's almost like a friend. And whatever he organizes in sciences or anything, he invites me and I share there his ideas and I learn from people there. So many, many years ago, I gave a talk on this Ram Setu there. That you see, I gave the same principle, explain to explain, and then I speculated. I didn't have any evidence, I had not studied it. That either the stones were made hollow from inside, stones को hollow किया गया, so that they floated. होता है ना, जैसे आप सेब को जब अवन में उसको छेक करके अंदर करके उसके ऊपर आटा लगा के फिर उसको आप अवन में डाल देते हैं, है ना, अंदर से करेले के अंदर से निकाल के फिर उसमें मसाला डाल देते हैं, तो अंदर ये तो भोजन से ही आ जाता है कि पत्थर के अंदर से निकाल दो वो फ्लोट करें. बट दैट कुड बी वन. The other is that they were placed, the stones were placed on logs of wood, logs of timber, in such a way that the logs of timber were below the water level, and the stones were, there they appeared. पानी का रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे होता है, तो पानी लगता है कि वो फ्लोट कर रहे हैं, stones are floating. That was the other. Then I said, speculate. You see, now this is, I am not a scientist, but I can speculate, and our scientists are speculators. They speculated. Einstein speculated. E is equal to mc square. Later on, some people proved this way, that way, this way, that way. ये है. Speculated. तो वो टिम्बर जो है, वो टिम्बर अगर है, you see the water level 7,000-8,000 years ago, the water level was lower than what it is today, about 10 feet lower, the water level. So, वो timber, but then you see, it is ocean, and in the storm, waves will come, and if there are timber, teak timber, bunched together, tied by vegetable ropes, and right across the isthmus, then when there is a storm and the great force, then the timber will be broken. You see, therefore it will be broken. You can't have a stone causeway there, because the stone also will be driven away. But the timber pieces, they were made porous. Small porous, holes were made in the timber, so that even when the storm comes, the timber pieces remain where they were. And there is a gentleman, Mr. M.K. Hari, in the south, who works a lot on science, on Indian knowledge. He and his wife were sitting there. After the talk, they came and said, sir, you are absolutely right. Because they have found नीचे वहां वो क्या हो जाए, ऑसिफाई हो जाते हैं ना, वो ossified timber they have found across that path. So you see, look at the kind of engineering, kind of technology. अब हम क्योंकि पढ़ते हैं कि वानरों ने, रीछों ने, अब वानर भी देखिए, वानर इज वन नर, जंगल में रहने वाले आदमी, उसको हमने संस्कृत वन नर को वानर बना दिया. वानर शब्द बन जाता है, वानर संस्कृत संधि से बन जाता है, पर हमने वानर को बंदर समझ लिया. और दिल्ली में जो हनुमान सेतु पुल है, उसके ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है मंकी ब्रिज. ये तो हमारी हालत है, हमको तो कुछ हमारे बारे में ही ज्ञान नहीं है. तो ये दिस इज हाउ, लुक एट this mode of thinking, this mode. And this, mind you, this is very important. Zero is invented by a grammarian, and the principle of floating, sinking and flying is explained by a philosopher.
दार्शनिक। उसको ये लोग साइंटिस्ट नहीं कहेंगे कि उसने कोई मेजर नहीं किया लेबोरेटरी में और उसने 10 बार सेब फेंक के नहीं दिखाया, 4 बार उसको ऊपर फेंक के नहीं दिखाया। जब तक ये नहीं किया तब तक तो आप मानेंगे नहीं कि साइंस है, बट दिस इज साइंस एंड आई थिंक दिस इज a very high degree of science. Now I will, in the final, I'll just tell you, because characteristic Indian sciences, बहुत बातें करने की, one can keep on talking about these things endlessly. You see, the point is that you should have self-confidence and you should return to your own knowledge. You see, that is important. Return to your own knowledge, stand on your own ground. You will understand even Western sciences better. If you stand on your own ground, you will have a better understanding of things. You see, in the Vedas, for example, first of all, we have our contemporary science, physics है, chemistry है, biology है, botany है, zoology है. ये भी बने बनाते बनाते बने. ये भी 19वीं शताब्दी के बाद डिसिप्लिन वगैरह बने. शुरू में इतने नहीं थे. पहले सिर्फ लैंग्वेज डिपार्टमेंट होता था, फिर लिटरेचर भी बन गया, फिर लिटरेचर में से कुछ वेस्टर्न लिटरेचर बन गया, कुछ इंडियन लिटरेचर बन गया, फिर ग्रीक लिटरेचर बन गया. ये जो यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन होते हैं, वो उसकी एक पॉलिटिक्स भी होती है और उसकी इकोनॉमिक्स भी होती है. क्योंकि अगर आप एक डिपार्टमेंट को बांट के 2 बना दोगे तो एक की जगह 2 प्रोफेसर हो जाते हैं, है ना. तो एक एसोसिएट प्रोफेसर फिर प्रोफेसर हो जाता है. तो उसमें फिलोसफी में से साइकोलॉजी अलग हो गई, तो साइकोलॉजी वाज पार्ट ऑफ फिलोसफी. So these disciplinary formations are not really very relevant. But the point is, we have all the ये सारे, अगर मैंने आपको बताया KTPI, please download from the CBSE website. KTPI 24 मॉड्यूल हैं, उनको देखिएगा ध्यान से प्लीज. उसके बाद आप जो आगे लेक्चर सुनेंगे ना लोगों के, तो जरा उनसे भी फिर बात करने में आपको ज्यादा रहेगी, जरा इच्छा भी रहेगी और आपको मन में भी करेगा कि पूछा जाए. तो वेदास, वैदिक वांग्मय, वेदों में I'll tell you, I think 120, 60, 220 sciences are listed in the Vedas. 220. You see, the first category is a nigama. Second category is agama. Agamas are 120. Third category, आगमों में आपका सारा ये रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री वगैरह, अरिथमेटिक्स, वो सारे आगम में आते हैं. And the third category is what is most interesting today for the West also. They are called Divya Vidya, Divya, extraordinary sciences. You see, extraordinary sciences which are 64 in number. 64. 16 of them are products of mental energy, mind, manas. And 16 of them are daivik, something that you acquire by tapas. आप तपस करके, कुछ करके आप वो सिद्धि प्राप्त करते हो. See, for example, if you read Yoga Sutra, Patanjali says, a person who always speaks the truth, a person who always speaks the truth, and whatever he says will come true. Will come true. जो व्यक्ति हमेशा सत्य में प्रतिष्ठित है, वो अगर कि उसके मुंह से जो निकल जाएगा वो सत्य वो हो जाएगा. इसलिए हमारे बड़े बूढ़े हमें कहा करते थे कि भैया अच्छी या बुरी बात सोच के बोला करो, सोच के बोला करो. You see, we should not be in a hurry to speak. इसी तरह Patanjali says in Sutras that a person completely established in non-violence, जिसमें हिंसा का अंश भी नहीं है. देखिए, हमें बारिश कोई सांप आएगा, कहीं टाइगर सांप आएगा, तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, तो हमारे में वो है बचने का, हमारी बॉडी टॉट हो जाती है. उसको वो स्मेल कर लेता है जानवर कि ये व्यक्ति जो है ये अब मेरे विरुद्ध है. तो वो जानवर, इसीलिए
परिंदे जो होते हैं, आपने देखा होगा, देयर आर सम पीपल, वो बैठे होते हैं तो चिड़िया आके उनके कबूतर ने चिड़िया, कौवे, जानवर आगे उनके बैठ जाते हैं उनके हाथ में। आई हैव सीन पीपल, चिड़िया उनके हाथ से आके खाती है। बट बर्ड्स आर वेरी स्केयर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम जैसे ही वहां जाएंगे 5 बर्ड्स बैठे होंगे, उड़ जाते हैं। बट ए पर्सन who is completely established in non-violence, says Patanjali, even the violent animals will become non-violent and come and sit next to him. शकुंतला में वो बताते हैं ना कि भरत सिंह के बच्चों के साथ खेलता था, शेरों के बच्चों के साथ शकुंतला का बेटा खेलता था। तो you see, these are sciences which come दैविक है। Then there are sciences which are यज्ञिक। जैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करके उसकी कोई पावर डेवलप करना। अब जैसे ये जो टेस्टर हैं, ये जो टी टेस्टर है, वो अपनी इस जिभा की पावर को इतना डेवलप करता है कि उसमें वो एबिलिटी आ जाती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेस्ट। अब जैसे रंग होते हैं, रंगों के भेद, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि लड़कियों को रंगों के भेद ज्यादा नजर आते हैं मनुष्यों की बजाय। मेन के मुकाबले विमेन आर एबल टू सी मोर कलर्स। तो अगर आपने अपनी आंखों को ऐसे ट्रेन किया कि भाई कर्मेंद्रियों को ट्रेन किया, देन यू अक्वायर सर्टेन पावर्स, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। जो दूसरे को नहीं दिखता वो आपको दिखेगा। ये क्लेम है। और हमारे नैरेटिव्स में, साहित्य में, हमारे दर्शन में, हमारे वो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें प्रक्रिया भी दी हुई है और एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, इन चीजों की। चौथा है वो है भौतिक, मटेरियल थिंग्स विच गिव पावर्स। जैसे ड्रग्स आर लिस्टेड। ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। हाउ? they change your level of consciousness. आप में से लड़के बैठे हैं, विस्की तो पीते ही होंगे। आप जब 2-3 पैग पीते हो तो आपकी वार्मथ आ जाती है, तो आप कहेंगे यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड, है ना, वेरी गुड फ्रेंड। वो कहेगा हाँ। 4 पैग पीने के बाद कहोगे यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड, यू विल से हाँ भाई मैं, कहेगा नो यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड। वो कहेगा हाँ आई एम यू, नो यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड। और 6 के बाद लड़ना शुरू कर दोगे, 8 के बाद लड़ाई हो जाएगी। होता है ना। तो ये जो अल्टरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रग्स से पावर, पतंजलि सेज कि ड्रग्स से भी समाधि लगती है। जो योगिक प्रक्रिया से समाधि निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि, स्टेट्स ऑफ माइंड, हाईली फोकस्ड स्टेट्स ऑफ माइंड, वेयर you lose awareness completely of the environment, of your body, of even there is no language in your mind. There is only the object of knowledge and you become one with it. ये समाधि कई टाइप की है, योग सूत्र में है। But then drugs से भी समाधि लगती है। For example, doors of perception or something. See, mescalita is a South American drug. Somebody takes that drug, then no straight lines are there. You are sitting in your room, there are straight lines. Everything will become wavy, waves. Your perception changes. Now the question is, what is the reality? The straight line that you are seeing in the roof of where you are sitting, straight line, is that the reality, or the waves that you see when you are under the influence of that drug? And a parallel, analogous question is, when a train is standing, it is very long, looks very long. When it travels at a very fast speed, it looks very small. So what is the reality of the train? Is it this, what you see when it is traveling fast, or what you see when it is standing? So ultimately,
The reality is what you cognize, and what you cognize is through levels of consciousness. And psychology is a science. It's a wonderful science, in fact. तो ये जो disciplines हैं, ये 64 दिव्य विद्या, they are threshold sciences. जैसे उसमें एक साइंस है इल्यूजन क्रिएट करना, इल्यूजन, भ्रम. अब ये पहले तो समझ नहीं आती थी, पर जो बाहुबली पिक्चर आई तो उसमें वो जो इतना बड़ा वाटरफॉल है जिसमें वो रानी एक बच्चे को ऐसे उठा के उस वाटरफॉल से गिरती है, वो वाटरफॉल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो इल्यूजन क्रिएट किया उसने. सिनेमेटोग्राफी हैज मेड illusion a reality. So what in the Vedic rishis, for Vedic rishis, it was a matter of imagination. It has become a reality through science, through technology today. So illusion create karna. Isi tarah, there are sciences like making yourself very light, making yourself very heavy, making, losing your mass completely. जैसे अभी भी इन नोन हिस्ट्री हरिद्वार में समाधि है लाहिरी महाशय की. लाहिरी महाशय was known as the levitating स्वामी. वो जब डीप समाधि में होते थे तो वो अपने आप जमीन से ऊपर उठ जाते थे 3 फुट. तो उनका जो मास था वो कम हो जाता था. तो ये तो उस उनकी योग प्रक्रिया से होता था. बट इफ यू डेवलप इट एज ए साइंस दैट यू कैन डू इट एट विल, आप एक बड़ी भारी चीज को बड़ी हल्की बना के ला सकते हैं. जैसे हनुमान द्रोणागिरी ले आए और भगवान कृष्ण ने वो पूरा पर्वत अपनी उंगली पे उठा लिया. नाउ द बेस्ट वे से दिस इज माइथोलॉजी यूज्ड टू से. These days, now they are seriously looking into these things. These are threshold sciences. These are sciences of the mind. I'll conclude by telling you, I will not go into all those 64, it would take a lot of time. But then वेदों में है, एक किताब है, मैं लिखवा देता, इंद्र विजयम. I translated it into English and it was published by Rupa. The author has described at length the Vedic sciences and given examples and also the processes by which. So these are our characteristic sciences, these threshold sciences, sciences of the mind, sciences of meditation, sciences of tapasya, and sciences of drug and mechanical also, they come in. So I will stop with one small narrative. एक हमारी कथा है जरत्कारु ऋषि की. Jaratkaru was a young man, very handsome, great thinker, and from the beginning, जैसे प्रतिभाशाली आर्य आदि शंकराचार्य 5 साल की उम्र में, by the age of 5, Adi Shankaracharya had mastered all the Vedas by the age of 5. Or by the age of 5, and at the age of 8, that Kerala boy, he was teaching Vedas in Varanasi to Brahmins at the age of 8. And by the age of 16, he had gone round the country 3 times, contended with Buddhism, re-established Sanatan Dharma, made 108 temples, 4 dham, Dashanami Naga sannyasiयों की स्थापना करी. And at the age of 32 he left the world. 32 and 18 उपनिषदों पे कमेंट्री लिखी, ब्रह्म सूत्रों पे कमेंट्री लिखी. इतना लिखा, इतना बोला, इतना घूमे, इतना कुछ बनाया, किया, इंस्टीट्यूशंस बनाई. By 32 he was gone. 32 की उम्र तक तो हम लोगों को दांत साफ करने नहीं आते कि ऐसे ऐसे करना है कि ऐसे ऐसे करना है ना. तो you see, प्रतिभा बाल, एक जरत्कारु ऋषि जो था उसमें प्रतिभा थी. वो जंगल में जाके बैठा. He wanted to search for one single principle behind all this, all this jagat. One single principle.
So he first thought, he sat down against a mountainside and he put a stick against a tree across the road. Road नहीं थी, वो जो रास्ता था, tree. And he thought that sound, shabd, but this is important. Shabd, sound, is an ontological element in Indian philosophy. Modern physics does not accept sound as a tattva, but Indian philosophy accepts sound as a tattva. You see, there is, even Plato said, there is a music of the spheres. जब आप अपने कान वान सब बंद कर लेते हैं, नासा ने recently, NASA recorded the sound of the sun. That sun in its rotation also produces a sound. So sound is an eternal element, and our philosophers say that sound is nitya, eternal. It is not created. It becomes hearable. You make it hearable, but it is always there. It's always there. Sound is always there. आप ट्यूनिंग फोर्क लेके जब उसको मार के पानी की पाइप पे करते तो आवाज आती है, वो आवाज पहले ही इमानेंट है. आप उसको, आप जो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कर रहे हो, जो अमूर्त है उसको मूर्त कर रहे हो. तो साउंड हमेशा रहता है. तो जरत्कारु thought that sound is the great principle. So he sat down and he ओम का उच्चारण करके ओम, he tried to draw the stick to himself. The stick did not move. Tried for 6 months, 8 months. Then he changed. He said, no, I think it is the mind. I must focus my mind on that. And with mental force, he tried to move the stick. And he reached a point where the stick started moving. Usme movement आई. But at that point of time, a very beautiful princess coming in a chariot for a hunt. The chariot met with an accident, upturned, and the princess fell down, and the chariot was broken, the driver was dead, and this man, boy, he went and saw, and he felt that she was groaning. So he picked her up, put her on her, and made her sit against the rock. Now, when he put her on his shoulder, he felt some sensation because he was a pure scholar. He knew grammatical gender, but he did not know the human gender. He was not aware, but he felt disturbed and his concentration was lost. That princess became aware, conscious. Her father came and she fell in love with Jaratkaru, and Jaratkaru followed her to the kingdom. Then that princess realized that she has intervened and disrupted a great process of knowledge creation. So she moved out of his life voluntarily. She moved out of his life. This is Jaratkaru ki katha. Okay? Thank you very much. प्रणाम. प्रणाम प्रणाम. आपने जैन अवस्था की बातें किए, तो वहाँ जो आहुर माजदा की बातें कहा जाता है, वही क्या हम लोगों का शुक्राचार्य है? मुझे समझ नहीं आई है बात. ऋचा जी, आप जरा बता सकती हैं कि क्या पूछा? जिंद अबेस्ता जो किताब है पारसियों हाँ, की, जी, उसमें जी, कह जी. रहे हैं आहुर माजदा उनका, क्या वो और शुक्राचार्य एक ही हैं? ये प्रश्न है सर. अरे Ahura Mazda is also name of a person, and it's a Zend Avesta. Zend Avesta is the name of the text. Ahura Mazda is like, you can say जैसे Zoroastrian God है Ahura Mazda. और ज़रथुस्त्र जो था, ज़रथुस्त्र वो फिलोसोफर था जिसने ज़ेंड अवेस्ता कंपोज की. सर, एक जिज्ञासा है. जो ऑन्टोलॉजी कहा, ऑन्टोलॉजी है जो हम जानना चाहते हैं, प्रमेय. हाँ जी. एपिस्टेमोलॉजी है
जो मीन्स हैं उसे जानने के प्रमाण। साधना, साधन, साधन। साधन, तो प्रमेय साधन। इम्पोर्टेंट होगा या प्रमाण इम्पोर्टेंट होगा? विच वन इज इम्पोर्टेंट, प्रमेय या प्रमाण? देखिए दोनों, you can't treat them separately. In any act of cognition, thought, both are involved. The object and the means. They are not separate, but they are interconnected. You know, one determines the other. You know, as I said, the object of knowledge is amenable to certain means of knowledge. है ना? It is not amenable to all means of knowledge. All means of knowledge. हाँ, देखिए ना, दोनों जो एक आपको कुछ समझ आई बात, जब कोई बात समझ आई तो जो आप समझे और जिस तरह समझे वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, भेद नहीं है। जी। ठीक है ना? तो सर इसी चीज को हम इसके साथ मिला सकते हैं जो कहा जाता है एकम सद विपरा बहुधा वदंती। नहीं, वो दूसरी बात है। देखिए वो ये है, हाँ इनडायरेक्टली वही नहीं, वो रिजल्ट हो सकता है। कैसे? देयर इज ए ट्रूथ आउट देयर, एक रियलिटी है, देयर इज ए रियलिटी आउट देयर, वी डोंट डिनाई कि एक सच्चाई है, पर वो सच्चाई क्या है, हम हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उस सच्चाई का वर्णन करता है, प्रेडिकेट करता है ना, हर व्यक्ति। देखिए दो व्यक्ति क्योंकि एक स्थान पे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी दो व्यक्तियों की दृष्टि एक जैसी नहीं हो सकती, है ना, भेद होगा। तो हर व्यक्ति अपने जहां वो खड़ा है और जिस तरह वो सोच रहा है, जिस साधन से, उस अनुसार उस सच्चाई का वर्णन करेगा। ठीक है? तो सच तो है, कोई डाउट नहीं है। हमारे यहाँ शब्द है सत्य, 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 सद SAT, सत्य, और सत्य से ही सत्य बनता है और सत्य से ही सत्ता बनती है, सत्ता, रियलिटी। तो वो सत्य तो है, पर हर वाइज पर्सन अपनी समझ के अनुसार उस सत्य का वर्णन करता है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करते हैं और हम सबको मानते हैं। We accept all. That is why we are pluralistic. We are not like the Abrahamic systems, monistic. We are pluralistic. हम सब मानते हैं, सब ठीक हैं, but as Bhartri says, we need एकत्व बुद्धि, एक बुद्धि नहीं, एकत्व, a unifying intellect. एकत्व बुद्धि सर्ववाद अविरोधिनी, उसका किसी वाद से विरोध नहीं होता। जहां इतनी प्लूरैलिटी हो वहां ट्रांसेंडेंटल थिंकिंग, यूनिफाइंग थिंकिंग की जरूरत होती है। जबकि जो वेस्टर्न थ्योरीज हैं जो हम लोग बोरो करते हैं, वो सारी कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस, भेद की थ्योरीज है। हमारे यहाँ भारत में भेद बुद्धि को छोटी बुद्धि माना जाता है, हम भेद से अभेद की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, नॉन डिफरेंस। अच्छा सर, मैं कह रहा था, आपने मेंशन किया था कि रिचुअल से रीजन की तरफ हम बढ़ें, और उसमें कहा था कि एक आत्मा की प्रेरणा बहुत आवश्यक है। तो ये जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था। अच्छा ना, हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, वैशेषिक के जी प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में था, आत्मा की जी 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 सर, जी सर। तो ये थोड़ी चीजें मैं क्लैरिटी चाहता था। वो जो प्रेरणा का था, वो देखिए हम जो कोई भी जब काम करते हैं, तो अगर आप सूक्ष्म रूप से अपने काम को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे एक पॉइंट पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है ना। अब वो क्योंकि हम इतना जल्दी इसका इतनी क्विक प्रोसेस होता है कि हम नोटिस नहीं करते, पर एक पॉइंट पे हम निर्णय लेते हैं एक प्रकार का। और जो प्रेरणा का मतलब वही है कि कोई भी काम जो होता है उसका जो उद्गम है वो पहले हमारे अंदर होता है ना, उद्गम वो अंदर होता है, वो वही है, कोई बहुत कठिन वो बात नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही कि दूसरी क्या थी, आपने रिचुअल से रीजन की तरफ हम आए।
हाँ, रिचुअल का कर रिचुअल देखिए, रीजन। व्हाट आई मीन इज के तर्क तो हमारे वैदिक सिस्टम के टाइम पे भी अनुमान बहुत पुरानी एपिस्टेमोलॉजी है। अनुमान अनुमान जैसे अरिस्टोटल में सिलोजिज्म बन जाती है ना, हमारा पूरा फिलॉसफी है न्याय। न्याय दर्शन जो है वो पूरा सिलोजिस्टिक रीजनिंग का ही दर्शन है, तो हमारा तो दर्शन ही है उसका। बट ये इसको इतना इंपॉर्टेंट स्टेटस देना रीजनिंग को, ये महात्मा बुद्ध ने किया। क्योंकि जो बुद्धिस्ट, जितना बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल लिटरेचर है वो हाईली रीजन बाउंड है, रीजन बाउंड है तर्क से। वैसे तर्क बुद्धि को हमारे यहाँ बहुत अच्छी बुद्धि भी नहीं मानते। जो ज्यादा तर्क करता है कहते हैं ये कुतर्क कर रहा है, या हम कहते हैं ये तार्किक है। आजकल के शब्दों में कहते हैं बड़ा बहसी है ना, बहस बहुत करता है। बट तर्क इज एक्सेप्टेड, इट्स एन ओल्ड। व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि जो साइंटिफिक टेम्पर की जो कंडीशन है वो तो इंडियन माइंड में तो शुरू से ही है, और उसकी कई जगह, एक जगह तो महात्मा बुद्ध ने तो उसको प्राइमरी बनाया, और न्याय दर्शन ने तो उसको फिलोसॉफिकल सिस्टम बना दिया रीजनिंग को, है ना। तो जो प्योर कर्मकांडी सिस्टम था, कर्मकांड वाला जो ब्राह्मण ग्रंथों में है, उस सिस्टम को इन्फ्लेक्ट किया और इसके तर्क को प्रेस्टीज किया गया। तो वी इंडिया हैज बीन ट्रेडिशनली मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। हमारे यहाँ मॉडर्निटी जो है वो ईसा से 6 शताब्दी पहले ही आ गई, क्योंकि ये भी जो लॉजिक है ये भी तो रेनेसां में ही आया ना, मॉडर्न में ही, यूरोप में। तो हमारे यहाँ तो हम तो परपेचुअली ट्रेडिशनल एंड परपेचुअली मॉडर्न। और तीसरी जो आपने बात कही, देखिए उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो हम लोगों ने अपने ज्ञान ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने छोड़ दिए। हमने तो छोड़ दिए, हमने अपने मंदिर छोड़ दिए, हरमंदिर साहब, दरबार साहब कर दिया, गुरुद्वारों में जाना कम कर दिया। 10 गुरु हमारे थे, 10 गुरु खत्री हिंदू थे, अब उनको सिख गुरु कहना शुरू कर दिया। हमने इसी तरह अपने ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए, अंग्रेजों के पढ़ने शुरू कर दिए। अगर कोई उनको पढ़ता है, चाहे फंड लेके पढ़ता है, तो अच्छी बात है। और हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट में कॉपीराइट है नॉलेज का, इंडिया में नॉलेज का कॉपीराइट नहीं है। हमारी ट्रेडिशन में ना ही ज्ञान का कॉपीराइट है, ना ही ज्ञान को बेचा जाता है हमारे यहाँ।